Hello everyone. Okay, so we are about to start with the event. Thank you for everyone for joining, and we'll start with it soon. Okay, I think we're good to go. Hmm. So let me start. Are you guys ready? You can just tell me in the chat, then I'll start. Okay, cool. So fine, let me begin. So my name is KHYATI Kapoor, and I'll be the speaker for today. This is a 7-day exploration week, which is in collaboration with the Clippers Child Council of India and the BrainX Academia. Both are the non-profit organizations that work for the welfare of students and the vulnerable children. And so today is the day one, and it's a gratitude. Okay, it's an honor actually for me to be the first speaker of the week. Okay, so let me introduce myself. Who am I? What's my background? What experiences do I hold? And why you should listen to me? Okay. So my name is Kali Kapoor, and I describe myself as a social worker initially. Besides that, I'm the president at the Maths Aiming Club. Recently, I hosted the Maths Aiming Conference. It's the first edition ever hosted, and I was the Secretary General there. I'm a senior research fellow at the Los Altos Institution, USA, which is a policy think tank, and I am currently under the South Asian geopolitics system. Then I am a UNHCR training for refugees. UNHCR is the United Nations High Commission for Refugees, and I work as a trainee there. I'm the youth ambassador at Honor Global, which is a non-profit organization based in Ireland. I was interned with Hindustan Times. I'm the head of department at BrainX Academia. I'm certain at arms at MAPS Interact Club. I hold the experience of being a PR manager at the Fortes of Conflict. I am an Emmy winner, a debater, orator, and also I have a podcast of my own that I'm the host of, that is BrainX Talks. And besides this, I hold the experience of publishing two research papers on SDGs, which was selected for this year's G20 Sherpa office. So this introduction was actually very important to give so that you all should know that who are you listening to, and this actually gives me a confidence to speak, and also you gives a trust that you should listen to me. Okay. So without further ado, let's get straight into the topic for today. So the topic that I have picked up for today is conquering student struggles, beating pressure, and finding passion. So now, why have I chosen this topic? What all I have to include in this topic? You'll get to know in a bit, and I have prepared some index and what all you should expect for this conference today. So we will begin by defining what all are the struggles that we face as a high schooler or as a professional working somewhere, right? They are like just some of the like broad categories of struggles that I picked up, but I know that there are many, many others. The list is never ending, guys, and I acknowledge that part. So the first one is expectations. This is the most haunting word we have ever heard of, right? From having parental expectations to having our own expectations ourselves. We'll dwell into this in the further segment. The second is insecurity. Oh my god, we have heard about this thing so much, but we actually don't realize what it actually means. And I'll tell you brief about what is insecurity, why it comes from, and how you should handle it. In the further segment, of course, then aspirations and goals. So basically, being a high schooler, we all are passionate about something, but that passion needs a direction. I will develop in the further segment and our most favorite and the common one, which is peer pressure. And I'll tell you this from my own personal story. And I have a full story time in which I'll be sharing my true life experience. And this story is
Like I'm not sharing with anyone right now, but I think it's a perfect time. And if you're facing any of this or even more of them, I must say you that sorry, it's all right, okay? And I'll tell you why. So, the first thing is expectations. Yeah, this word is something that as a high schooler we all are afraid of because we all know that our parents have some expectations from us. We ourselves have some expectation from us that Sharma ji ka ladka, Sharma ji also has some expectation from that Sharma ji ka ladka. So this is all about how this expectation builds a pressure on us, how it affects us mentally, how it actually influences our nature and how we interact with others, right? सो पहली बात हम सब ने ये झेला है। हमारे पेरेंट्स कभी ना कभी तो हमें ये ज़रूर कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सो एंड सो क्लास में टॉप करो या फिर इन अ टॉप भी अगर ज़्यादा लग रहा है देन ऑल्सो like our parents say that to be all rounder or to be the best at something that we are good at, or our parents are always like they're motivating us and they really want us to progress. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है फिर अगर सब कुछ इतना बढ़िया है, पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं, सब हमारा भला चाहते हैं, पूरी कायनात हमारा भला चाहती है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हम उस एक्सपेक्टेशंस को कैसे लेते हैं, हाउ वी डील विद दैट एक्सपेक्टेशन। कभी कभी हम उस एक्सपेक्टेशन को अपना एक मेंटल प्रेशर बना लेते हैं, जिससे हम कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं, कभी एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह। बट इन सब में अगर हम ना चाहकर उसे एक सही चैनल में मोबिलाइज करें, तो इट would be a game changer for all of us, guys. Now, dwelling to the second most important thing, that is insecurity. Now, insecurity. From where does this insecurity come from? I have seen that it comes from A, friends. B, are growing social media influence, guys. No one can deny कि दीपिका पादुकोण, अनुष्का, इन सब की रील्स वगैरह देखकर हमें भी लगता है, oh my god, this is beautiful. They are rich, maybe they're living a lifestyle that I always dream of, and so and so. So social media भी हमारी insecurity पे कहीं ना कहीं बहुत impact करता है. Then why? Why do we feel insecure? आखिर ये insecurity हमारे अंदर आती ही क्यों है? ये आती है क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत inferior हैं. When we start feeling this inferiority complex कि someone else is better off or someone else is more superior than me, तब तब हमें ये insecurity आती है. And हमें कभी-कभी लगता है कि I am not so perfect, and उस उस आइडलिंग परफेक्ट को लाने के लिए हम अपने आप को ही बदलना शुरू कर देते हैं। एंड इसकी वजह से हम कभी कभी मेंटल इश्यूज के भी शिकार हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज सो कॉमन दैट इट हार्डली गेट नोटिस्ड, राइट? And now, what are some of the kinds of insecurity that like the most common for everyone? A, body type. You're skinny, you're fat, you're short, you are tall. All this comes in a body type, and this is like the most common form of insecurity that we have. Then, as a high schooler or as a student, we sometimes get insecure of our grades. That marks कम आ रहे हैं, oh my god, उसके मेरे से ज़्यादा marks हैं, मेरे कम marks हैं, and so on and so forth. That is also a kind of insecurity. Then the most worst form of insecurity is financial condition. When you think that तुम्हारा दोस्त तुमसे ज़्यादा अमीर है या फिर उसके पास आईफोन है, एक गाड़ी है, एंड वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ला रहा है, जब तुम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर यू योरसेल्फ डेवलप इनसिक्योरिटी की आई मे बी नॉट दैट बेटर ऑफ, या फिर मैं कहीं ना कहीं इससे बहुत पीछे हूँ, एंड सो फोर्थ. That is like you are developing an insecurity of something that right now you can't control, but maybe in the future the tables may turn, but right now it's of no use, right? And then the most unique form of insecurity that I personally had in my class, like when I was young, the biggest insecurity of me was
having no friends. Yes, ट्रस्ट मी गाइस, मेरी इनसिक्योरिटी ये थी कि मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि जब मैं लाइक देखती थी अपनी क्लासेस में, हमारे रिसेस में हमेशा भी पार्टनर होता है जिसके तरफ से जाना पसंद करते हैं ना, हाथ में से हाथ डालकर सहेलियों की तरह। हमें रिसेस में भी सब घूमना पसंद है, बाहर जाना, आउटिंग और सो ऑन सो फोर्थ, जितना भी फन लाइफ होता है फ्रेंड्स के साथ। आई वॉज इनसिक्योर अबाउट इट कि मेरे पास कोई नहीं था। ओके, I still remember doing my lunch breaks alone, and initially I was okay with it. कि fine, ठीक है, I am good with myself. मैं बहुत अपने को मोटिवेट करती थी कि ठीक है ना, क्या ही हो गया, it's all right, कि uh, if I don't have a company, at least I'm not in a bad company, right? So ऐसे मैं अपने आप को इनिशियली बहुत बोलती थी, बट उसके बाद कहीं ना कहीं ये डेवलप होना शुरू हो गया कि I don't have friends. I have no one to talk with. So this is also kind of insecurity that mostly introverts or some students have, जो या तो ओपन अप हो नहीं पाते या फिर ओपन अप होना नहीं चाहते, राइट? And this is also very important kind of insecurity that we hold. Now talking about the aspirations and goals. Okay, this is something that is really so common with all of us. Okay, all of us. This is like I want to address here कि एज ए हाई स्कूलर हम सबको कुछ ना कुछ करना है, राइट? हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम या तो एक लाइफस्टाइल को ड्रीम करके रखते हैं, राइट? आइदर वी वांट गुची ड्रेसेस, लैम्बोर्गिनी, एप्पल के फोन्स। आई मीन एप्पल के फोन्स चलो अब सबके पास आ रहे हैं, बट स्टिल यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? कि हम एक फैंसी लाइफस्टाइल के आगे ड्रीम कर रहे होते हैं, या फिर हमारे अंदर एक गोल होता है, या फिर there is something that we are really really passionate about and we want to have it, right? So I remember एक गाने की lyrics हैं कि when there is a desire, there is gonna be a flame, and when there is a flame, someone's bound to get burned, and just because it burns doesn't mean that you're gonna die. You gotta get up and try. So ये कुछ ऐसे lyrics हैं जो मुझे definitely like personally बहुत motivate करती हैं कि it's okay to have goals, and actually it's superb to have goals, right? If you have something to look up to, if you have something to dream of, work on, right? This is fantastic at this age, क्योंकि हमारी एज के बहुत सारे बच्चे अभी तो यही सोचते हैं कि उन्हें करना क्या है, और कुछ तो ये भी नहीं सोच रहे कि उन्हें करना क्या है। दे आर जस्ट गोइंग इन अ फ्लो जो उन्हें सोसाइटी दिखा रहा है। बट इफ यू आर समवन जिसे सोसाइटी से हटकर दिख रहा है, जिसे ये दिख रहा है कि जितना भी सब मेन स्ट्रीम चल रहा है, इसके अलावा भी बहुत अच्छी ये बहुत वेल ऑफ दुनिया है विच इज येट टू एक्सप्लोर, then congratulations, you are among the 2% of the population. Congratulations, very. क्योंकि हैविंग अ गोल इन हाई स्कूल इज रियली 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 इम्पोर्टेंट, और शायद इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में हमें सेल्फ अवेयरनेस फॉर्म्स लिखवाते हैं कि व्हाट्स अ लॉन्ग टर्म गोल, व्हाट्स अ शॉर्ट टर्म गोल, आर यू अचीविंग इट, व्हाट्स स्टेप्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हैविंग गोल इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, एंड देन यू शुड हैव द करेज टू परस्यू इट, ठीक है? बहुतों के पास बहुत गोल्स होते हैं, ठीक है? आई टेल यू माई स्टोरी इन दैट केस कि I always wanted to be, or like not want to be, but wanted to go in the field of humanities, and I was really passionate about it. But कुछ ऐसे circumstances हुए like टेंथ में सबको अपनी stream चुननी होती है, right? कि okay fine, now we have to go with a stream something, right? तो मेरे सामने भी वही situation खड़ी हो गई थी कि now I have to decide what I have to do, right? So when I had this thing going up कि अब मुझे आगे क्या करना है, तो मैंने सोचा कि मेरा पैशन कहाँ है? मेरा पैशन ह्यूमैनिटीज़ में था, राइट? और मेरी मम्मी ने ना, मुझे याद है उस टाइम पे लिखवाया था कि if I take humanities, what's good, what's bad? If I took science, what's good, what's bad? And same with commerce as well. क्योंकि I was so confused in what choice I should make in that very moment. So मैंने क्या करा उस टाइम पे? सी, मुझे पता था कि आई एम गुड एट ह्यूमैनिटीज एंड मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो मैं कर लूंगी, बट प्रॉब्लम यहाँ आ गई थी कि आई वॉज नॉट
सिक्योर अबाउट उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम सब ने लाइक इफ अगर तुमने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं या फिर आने वाले हैं तो ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना कि तुम्हें स्ट्रीम क्या लेनी है, और कभी तुम दो स्ट्रीम्स के बीच में कंफ्यूज हो कि यार जैसे मेरे केस में आई वाज कंफ्यूजिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। आई नो बहुत दोनों अलग स्ट्रीम्स हैं, बट कंफ्यूजन भी इस बात पे थी कि साइंस इसलिए ले रहे थे, एक तो सिक्योरिटी आ जाती है, आई मीन अनसेड सिक्योरिटी आ जाती है, आई डोंट नो कैसे, बट हाँ फैमिली भी पूरी सिक्योर हो जाती है कि ओके लड़की ने साइंस ले लिया है, सेट है मामला। और दूसरा रीजन ये भी था क्योंकि आई स्कोर अ फेयरली गुड परसेंटेज इन क्लास 10 बोर्ड, आई स्कोर 96.8%। तो उसके बाद भी फैमिली थोड़ी पम्प्ड अप थी कि ओह 95 प्लस, ये तो पक्का साइंस लेगी। बट डीप इनसाइड मी मुझे था कि नहीं भाई नहीं करना साइंस मुझे, आई मीन लाइक करने को आई वुड हैव डन इट राइट, बट आई वुड हैव डन इट बाय हार्ट। और इफ आई कुड पुट इट दैट वे कि मेरा दिल नहीं है उधर टाइम, मेरा दिल ह्यूमैनिटीज में था और मैं कर साइंस ली गई, यू नो नहीं जा रहा कुछ भी, रिलेशन नहीं बैठ रहा। So that was a point where I took a decisive decision of my life to quit science after doing it for a month. हाँ, under pressure, I took science. I did it for a month, and trust me, I was doing it fabulously. Time किसी चीज़ कोई कंप्लेंट नहीं थी कि अरे पढ़नी नहीं होनी ना, ऐसा कुछ नहीं था। It was just कि मुझे नहीं करना था टाइम, it was just that much. So after doing it for a month, I realized that you know आई एम नॉट ख्याति हु इज इन साइंस। वो ख्याति नहीं है राइट, वो कोई और ही लड़की है जिसने एक महीने तक स्माइल नहीं करा है, जिसने एक महीने से अपनी हॉबी प्रैक्टिस नहीं करी है, जिसने एक महीने से अभी तक किसी से खुलकर बात नहीं करी, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ करने का। तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मेरा ये पाथ तो डेफिनेटली नहीं है। एंड आफ्टर टेकिंग इट फॉर अ मंथ आई वाज लाइक कि लेट्स स्विच इट अप, ठीक है मुझे नहीं करना है ये। एंड दैट वाज मोमेंट आई टुक अ शिफ्ट टू ह्यूमैनिटीज। ओके, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्योंकि बहुत लोग उस टाइम पे ये भी था कि बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे कि स्टार्टिंग में बोलती थी ह्यूमैनिटीज लेगी फिर साइंस ले ली, फिर एक महीने साइंस ह्यूमैनिटीज में जंप कर दिया, ये क्या कर रही है। एंड बहुत लोगों ने बहुत स्टोरीज बनाई, बहुत कुछ हुआ, बट एट द एंड लोगों ने जो बोलना है वो तो उन्हें वैसे भी बोलना है। तो इस बात पे ध्यान ना देते हुए कि लोगों ने क्या बोलना है, लोग क्या करना चाहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, अपने थोड़ा मन की सुनो, दिल में देखो कि तुमने क्या करना था। जब मैंने लोगों की सुनी तो मैंने साइंस ली, ठीक है उसके बाद मैंने एक महीने में अपना हाल देख लिया कि नहीं करना ये मेरा पास है ही नहीं। एंड उसके बाद आई रीबटल्ड एवरीथिंग, रीसेट करा पूरा सीन और फिर ह्यूमैनिटीज में गई थी। एंड दैट टेक्स करेज गाइज, दैट टेक्स करेज। एंड आई हैव ऑलरेडी मेरी मम्मी ने भर दी थी कोचिंग की फीसेस, बुक्स आ गई थी साइंस की, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। एंड उसके बाद स्विच करना takes courage, takes guts and takes support as well। मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे क्योंकि दिख रहा था सबको कि आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। एंड मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया इन स्विचिंग द स्ट्रीम्स आफ्टर अ मंथ। तो जो भी तुमने करना है ना, एक तो डिटर्मिन हो जाओ फाइन। यहाँ तो देखो कन्फ्यूजन तो देखो सबके लाइफ में थी, मेरे टाइम पे भी कन्फ्यूजन मुझे थी इन दोनों में, और मैंने गलती करी, ठीक है मैं तो भी एग्री करती हूँ, मैंने गलती करी थी बाय टेकिंग साइंस एट द फर्स्ट प्लेस एंड देन जंपिंग टू ह्यूमैनिटीज। जो मेरा एक महीना वेस्ट हो गया एंड पैसे जो वेस्ट हुए वो तो अलग ही उसका सीन था। तो बी डिटर्मिन, थोड़ा अपने आप में रेट्रोस्पेक्शन करो और जितना हो सकता है ना बाहर से टेक गाइडेंस, ठीक है मेंटरशिप लो, गाइडेंस लो, बट कभी भी उसे इन्फ्लुएंस मत होना, कभी भी उसको रिजिडली फॉलो मत करना। सारे लोग फॉलो योर पैशन, बट इफ यू रियली थिंक कि पैशन फॉलो करने से यू आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, या फिर तुम्हारा जो लाइफ का पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है, देन ओनली डू दैट। टेक रिस्क बट टेक कैलकुलेटेड रिस्क। सोचो समझो कि अगर मैंने ये करा तो इसके आगे क्या, अगर मैंने ये करा तो इसके आगे क्या, अगर मैंने नहीं करा तो भी क्या, फाइन। तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने के बाद टेक योर डिसीजन, फाइन।
And the next thing is find what truly excites you. This is something that's so common, और यही पॉइंट है जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि what really excites me. कभी हमें लगता है अरे मैथ्स इज सो गुड, बट फिर हमें लगता है मैथ्स में मार्क्स नहीं आया तो छोड़ो, ये नहीं होने वाला. और कभी हमें लगता है कि एस टी मार्क्स आ रहे हैं बट एस टी में ट्रस्ट नहीं है. तो ये सब चलता रहता है. बट कभी ना एक टेस्ट लेना अपना, ठीक है, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना, और डेडिकेटेड 1 घंटा देना. फ़ोन नहीं होना चाहिए और कोई और सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. और तब देखो कि उस 1 घंटा में जो तुमने पढ़ा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या थी? क्या तुम्हें मज़ा आया वो सब्जेक्ट पढ़कर, वो टॉपिक पढ़कर, तुम्हें कुछ समझ आया? एंड उसके बाद यू विल बी नोइंग दैट वेयर यू स्टैंड in regard to that subject you तुमने पढ़ा. And this trick will definitely help you. My personal recommendation to try it if you are yet to take a stream या फिर तुम confused हो and what to take a stream. Fine, then believe in yourself because others will only demotivate you, and I am standing example for this कि भाई तुम्हें अपने आप पे विश्वास करना ही पड़ेगा. बाकी बहुत बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे कि ये तो पागल हो गई है, ये साइंस लेने के बाद ह्यूमैनिटीज की ले लिया, वो भी 1 महीने बाद जब पैसे से सब दे गए थे. तो बोलेंगे लोग, बट ये ना अपने ऊपर होता है कि तुम उसे किस वे में ले रहे हो. मैंने उसे लिया कि हाँ मेरी गलती थी जो मैंने 1 महीने वो वेस्ट करा, बट एटलीस्ट मैंने उसे सही टाइम पे रेक्टिफाई कर लिया. दैट इज इम्पोर्टेंट. फाइन. Then, okay, this is like the favorite time for this whole conference, right? And you will love the story time. I am telling you, okay? And like this is a guarantee कि तुम्हें बहुत मजा आएगा story time में. So this story time is this is my story. ये मेरी वो स्टोरी है जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है, या फिर आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड टू टेल एनी वन क्योंकि थोड़ी पर्सनल है. बट दिस स्टोरी एक्चुअली टेल्स की हाउ अ मीडियोकर गर्ल who had no relation with anything, जो जिसमें टैलेंट था बट वो कुछ कर नहीं रही थी, राइट? एक वैसी लड़की कैसे आज जहाँ खड़ी है वहाँ पहुँचती है, ये वो स्टोरी है. So don't miss this part. This is the most interesting part of this content. Okay. Now इस स्टोरी का मैंने टाइटल दिया है The Lost Star, and you will know I'll justify this title after my story completes. So till I was in class fifth, I was a very competitive girl. Fine, like मेरे को सिर्फ मेरा नाम चाहिए था टॉप पे, and that was it. Fine. That is why due to I was so competitive in nature, तो मेरे को friends नहीं बने थे. Till fifth class, I had no friends. I mean, कहने को yeah, I talked to 3 to 4 girls, but they were also my competitors, and I never liked them because मैं उन्हें हमेशा उसी लेंस से देखती थी कि ओ आई हैव टू बीट देम अप, कुछ वैसे लेना. तो क्लास 5th I had no friends. I had like no one to actually spend my free time with. I was always a very competitive girl, want to outshine everyone and stuff. Then जब मैं क्लास 5th से 7th के ब्रैकेट में आई, everything got changed, right? Suddenly मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी. You imagine, 5th था जिसको फ्रेंड का मतलब नहीं पता है उसकी 5th क्लास में एक बेस्ट फ्रेंड बनी है. एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था टू हैव फ्रेंडशिप एंड टू हैव अ रियल फ्रेंड. जो कहते हैं ना BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, वो वाली फ्रेंडशिप थी मेरी. एंड आई ट्रस्टेड हर ब्लाइंडली. मैंने इसको बहुत ट्रस्ट किया क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम बीइंग इन्वॉल्वड इन सच अ फ्रेंडशिप. तो था कि आई वाज गिविंग माय 100% इन फ्रेंडशिप, राइट? और वो मेरे लिए एक बहुत ही हैप्पीएस्ट फील था मेरी पूरी लाइफ में इन रिगार्ड टू फ्रेंडशिप वाला सीन. And I was just so comfortable in that duration, 5th to 7th month. I had no desire to do anything out of my friend. I always wanted to live with her. I just wanted to enjoy that period with my so-called best friend. And 5th, 7th तक यही चला. I was on top of my feelings कि अरे मेरा friend है. And that girl influenced me in such a way that was just not appropriate. And I won't go deep into that part, but you got an idea. He she had a bad company, but I enjoyed her. ये सीन था मेरा 5th से 7th में.
एंड उसी टाइम पे मेरी मम्मी और पापा के साथ ना रिलेशन सही नहीं चल रहे थे। अगेन इसीलिए क्योंकि आई वाज सो इनटू माय फ्रेंड्स कि हमने पेरेंट्स से वो खुल के बात नहीं कर पाई थी, या फिर आई वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू देम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि they just don't get it, that famous line, they just don't get it, जो हर हाई स्कूलर को लगता है अपने पेरेंट्स के लिए। सेम मेरा सीन था 5th से 7th तक। बट जैसे कि 8th क्लास आई, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑल टुगेदर। माई लाइफ कंप्लीटली चेंज एंड इसके कुछ रीजंस थे। पहला रीजन था कि वी लाइक ऑनलाइन था, वी वर ऑनलाइन, कोविड का टाइम था। देन शी लेफ्ट द स्कूल, फाइन, उसके पापा का ट्रांसफर था तो शी लेफ्ट द स्कूल, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा क्योंकि वी वर ऑन चैटिंग एंड स्टफ, और वैसे भी ऑनलाइन था तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे। बट उसी टाइम पे मेरे फैमिली के मतलब एट माई फैमिली फ्रंट एवरीथिंग वाज जस्ट सो मेस्ड अप। आई वाज इन मेडिकल इमरजेंसीज एंड आई मीन medically we were not just going well in that period. And when I was diagnosed with COVID-19 myself, the first phone call I did was to my friend to tell her that, so and so has happened in my family and it's all going so wrong. And I remember that I trusted so blindly that I, like, my first phone call, not to my mother, not to anyone in the world, but to her, and that too I was crying, ki, so and so has happened, and I don't know what to do and stuff. And I remember she was like, no, okay, it's fine, it's all right, and so. But after a couple of days, after that phone call happened, she blocked me. Really, she blocked me from every social media platform. I searched for her like madman, I searched on Instagram, Facebook, WhatsApp, and like trying from different numbers that she picked the call and stuff. But she just went away so silently and completely that I never ever imagined. And at that point of time, I felt that, bro, I had lost, because that was the time कि मुझे लगा मैं लॉस्ट हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे क्योंकि सेवेंथ के सीन की वजह से। मेरी एक ही फ्रेंड थी जिससे आई वाज सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू एंड एंजॉयिंग, एंड इवन शी लेफ्ट मी एट दैट टाइम व्हेन आई नीडेड हर द मोस्ट। सो आई वाज लाइक complete darkness. I have no one. I don't know what to do. I don't know what I have done. And आगे मुझे क्या करना है? No idea. Completely no idea. But at that time when I was feeling totally broke, when I was feeling totally blank, मेरे mind में कुछ नहीं था क्योंकि I had no one and I have no nothing to even think of कि अब क्या, कुछ नहीं, everything is done, finished, खत्म। And that was the time when I moved to like my class 9. Everything was like in a hybrid mode now. And then I pledged to myself that I will never make a friend again, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बाद मेरा तो फ्रेंडशिप से विश्वास ही उठ गया था कि नो, आई वोंट ever make a friend ever again. And I realized that I have my family to take care of. I left everything. I left from every entertainment, everything, and that's was the time when I worked on myself. I studied and studied and I had nothing on my mind क्योंकि मुझे पता ही नहीं था what I have to do now. तो मेरे पास सिर्फ एक काम था and that was doing my classwork, doing studying and stuff. And after my class 9, I actually stood first in all the section of class 9, beating my constant scholar जो हमारे बैच की थी. I surpassed her as well and got 97.3%. And a girl who has never even crossed 90% in my entire life, that was the time when I got 97%, and that means a lot to me, a lot to me. And I see class 10th I'm in class 11th now, so things are going good, not smooth, but good probably. And that was the time I realized that हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है. We should prioritize ourselves and our work, and friendship तो होती रहेगी fine, and never ever devote yourself 110% to a friendship जिसमें the other person is not committing even 80%, because that's like a dead end. Okay, there is no future for that kind of friendship, and I won't go deep into that scenario, but that's a little out of topic.
But I would say that prioritize yourself, and whenever you face that everything shut up, everything has just shut down, you have nothing to see, nothing to feel, and you are just on numb altogether, take a break and don't think anything. You have a work in front of you. If you are a high schooler, you have studied, and just devote yourself 100% to it. And then you will see that you have become so much better, because I myself feel that seventh तक जो एक लड़की थी, she died at class 8, and then a new girl was born. You know, and this is something that is like the core theme जो मैं आज की talk में तुम्हें I want to share with everyone, and this was like my story time. And these are some of the key things that I want you all to take away if you have attended this workshop till here. That believe in yourself. अपने आप पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा. Everything will work somehow. Okay, then nothing lasts forever. You are having a very good time, very good party and stuff, you're enjoying. Remember, nothing lasts forever. You feel sad about it, but if you're in such a position that nothing is going good, everything is messed up, then also remember that nothing lasts forever. And that might give you a little hope to go ahead and just not lose that path. Then make your words, okay? Have self-worth, अपना एक skill सीखो, work on yourself, prioritize yourself again, then never go after anyone. किसी के भी पीछे इतना मत लग जाओ कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ. That is the biggest lesson I have ever learned in my life. Then you are strong, you are capable, and you will do it whatsoever. Then always be grateful, because even I am right now, whatever I am, like अभी मैं कुछ इतना भी नहीं बना, honestly. I have more way to go, okay? I don't say that I have accomplished something. No, I haven't. I am in process. So तुम जहाँ पर भी हो, whatever you have become, whatever you are becoming, always be grateful. Be grateful to God, be grateful to your parents, be grateful to your teachers, be grateful to every person who is helping you to become where you are. क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बेटा सक्सेस किसी अकेले की नहीं होती, right? So always remember that part as well. And with this, I think that we have come to the end of the session. And thank you so much for being with me till here. And if you have anything, you just write on the chat box. I am seeing there. Um, okay, so thank you so much for being with me till here, and I hope तुमने कुछ सीखा ही होगा. And अगर तुमने आधा घंटा लगाया तो you should take something with you after this conference. And thank you so much for joining. And I'll see you guys tomorrow. कल किसी दूसरे speaker की बारी है. And that speaker is also great, amazing. So do join tomorrow as well. And thank you so much for joining today. Thank you so much. With this, I'll bid you farewell for today. Thank you so much.